Hello students, welcome you all to Sunya IAS. Welcome back to Top 50 Rapid Current Affairs starting from the month of May. Hope your preparation is going very good and you people are revising the current affairs, which is going to be the most dynamic part of your preparation. This initiative is to make you aware with the top pointers, top news items, top analytical terms in the news regarding different subjects into the current affairs so that you can make the best use out of it for the UPSC CSE Prelims 2024 examination. Let's start. The organization of topics have been done in the following manner: that 1 month's current affair we cover in 5 days. Small videos are there so that you can revise them effectively. Okay, and those students who have not been following this program, you can open the playlist and play all the videos starting from the month of May. From 1 to 5 we cover 1 month, 11 to 15 we cover another month, and 21 to 25 we cover the next month. हर एक दिन का schedule ऐसे है. For example, 11th March we have discussed economic development related current affairs news items. 12th March we have discussed polity, governance and international relations. 13th March environment and ecology related species treaties, what are in the news. 14th March science and technology. Today we'll be discussing a lot of good things into the news. 15th March reports, indices, defense, art and culture, government schemes, miscellaneous topics. I hope you people are also consolidating your current affairs just like that. Okay, and for the students who want to have the full confidence in current affairs, Achilles heel for many students, because static तो आप consolidate कर लेते हो, revise कर लेते हो, PYQs भी solve कर लेते हो. Current affairs का PYQ solve करना, current affairs के question में knack develop करना, उसके context को appreciate कर पाना becomes tough for certain students. So for that reason, current affairs crash course is there from the 19th March, Tuesday. The offline current affairs crash course is there in the Delhi. You can register for it, and for the online you can visit the website www.sunyaias.com, where you can have the online access to the course of current affairs. First topic is Square Kilometer Array Observatory, SKAO. We have been talking about telescopes. Telescopes कई तरीके के होते हैं, ठीक है. Generally, when we picture the telescope into our kindergarten days, we find the light telescopes. The light ray will come into the telescope. Some structure would be like this, okay. And from here, we will decipher the object. Telescope. Point is, there are different kinds of telescopes. कुछ telescopes होते हैं radio telescopes. Some telescopes are called as infrared telescopes. James Webb Space Telescope we have seen, Hubble Space Telescope we have seen. Similarly, from the ground, the largest radio telescope, it has been proposed Square Kilometer Array Observatory. ठीक है, ये propose हो रहा है, जो complete होगा 2028 में. Getting this point, 2028 में complete होगा. This topic is important not just for this year's examination but for the mains as well as. Okay. International effort to build the world's largest radio telescope with eventually over a square kilometer, 1 million square kilometer of collecting area. देखो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा. One is South Africa. Okay, here South Africa. Another is Australia. Which part of Australia? Western Australia. Potential array stations are here. Karoo Desert here. Okay, SK would extend to Ghana and Kenya as well. Getting this point? लेकिन दोनों में different frequencies use होंगी. Okay, Australia low frequency, South Africa mid frequency. Australia में low frequency and South Africa mid frequency. Cores are being built in southern hemispheres where the view of the Milky Way galaxy is the best and radio interferences are least. Interference नहीं होना चाहिए. जैसे हमने last class में we have talked about dark sky reserves where the track of lands are there which has minimal light pollution, minimal light interference, so that we can watch the celestial objects with full accuracy. यहाँ पे भी हमें radio disturbances नहीं चाहिए. We are looking for the places जहाँ पे radio signals की वजह से disturbances नहीं हो. Getting this point? What is the purpose of a telescope? This is why I call that you have to utilize certain logical thinking. Just by memorizing SKAO will not solve the problems in the examination.
Telescopes are about looking to the far away objects, celestial objects. Similarly, this radio telescope, just like the infrared telescopes of James Webb Space Telescope, हम देखना चाहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी जब बना था, या फिर बिग बैंग थ्योरी, विच इज अ हाइपोथेसिस, वी स्टिल डू नॉट हैव कंक्रीट एविडेंसेस टू प्रूव इट, आर दे राइट और रॉन्ग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट. तो हम बहुत पुराने टाइम के जो ब्लैक होल फॉर्मेशंस थे, उस समय की जो रेडियो वेव्स आ रही हैं अभी तक, उन रेडियो वेव्स को एनालाइज करेंगे इसके थ्रू. सो जितना ज्यादा कैप्चर होंगी रेडियो वेव्स, उतनी बेटर एनालिसिस होगी. देयरफॉर द साइज इज सो बिग. इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established early in 2021. तो देखो 2021 में हुआ, 23 में we have finalized the project, 24 में, 28 में it will be on ground working. Is dedicated to radio astronomy, is headquartered is in UK. It will undertake construction, operation and maintenance of square kilometer array telescopes. From 16 member countries take part in the SKA project. National Center of Radio Astrophysics represents participation from India. So India is participant to it. ठीक है, few pointers that are important कि radio telescope, it's not infrared telescope, it's not optical telescope. Which places we are going to set it up? Okay, Karoo Desert, Ghana, Kenya and South Africa basically. South Africa you can remember, and Western Australia. एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ये जो है सेकेंड डेडिकेटेड मिशन है, ओके, पोलैरिमीटर सैटेलाइट के लिए. यू विल अंडरस्टैंड, फर्स्ट तो बेसिकली वाज लॉन्च्ड बाय नासा. फर्स्ट बीइंग नासा's इमेजिंग एक्स-रे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर in 2021, second satellite in the world to study X-ray polarization. Now students, X-ray polarization ये word है, what is expected that UPSC sometimes take you one step ahead. अब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए पढ़ना कि सैटेलाइट कौन सी है, what is the purpose of that satellite and which space agency, which country has basically launched it. Now polarimeter, the light waves, if I talk about normal light wave, normal light, you will find that it has electromagnetic waves and magnetic vectors. Basically they are perpendicular to each other. Okay, they are perpendicular to each other. वो perpendicular vectors है ना, it's not a scalar quantity, it's a vector quantity. So उनके directions हैं and all of them are at 90 degrees to each other, perpendicular होते हैं. Polarization जो हम करते हैं, जैसे it involves a lot of principles, sometimes reflection, refraction, okay. सारी लाइट्स को एक डायरेक्शन में, एक प्लेन में लेकर के आना is called as polarization. Bringing all the waves, all these vectors into one plane is called as polarization. Sometimes you would have heard about polar glasses. We use polar glasses into the spectacles also. So research measures X-ray emissions from celestial sources like black holes and neutron stars. देखो, किसी भी मिशन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, चाहे लास्ट हो हमारा रेडियो टेलीस्कोप्स हम देख रहे हो, चाहे एक्सपोसैट हम देख रहे हो. देयर और ऑब्जेक्टिव वाज हम रेडियो वेव्स को एनालाइज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी. हियर वी आर यूटिलाइजिंग, वी आर वाचिंग एक्स रेज, क्योंकि जब भी जैसे बिग बैंग थ्योरी होती है तो वहां पे गामा रेडियो बर्स्ट होते हैं, GRBs, गामा रेडियो बर्स्ट, which is called as GOAT, greatest of all times or brightest of all times emissions are there. तो वो X rays जो हैं वो अभी भी somewhere we can find them and then we can analyze. तो हम उसको polarimeter के थ्रू एक प्लेन में ला करके एनालिसिस करना चाहते हैं. First dedicated satellite from the ISRO for polarimeter. ISRO successfully launched the X-ray polarimeter satellite by PSLV. PSLV से लॉन्च हुआ था, ये याद रखना है, PSLV C58. C58 was the 60th flight of ISRO's PSLV vehicle, not from the GSLV but from the PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Viper rover, it is by NASA. ठीक है, देखो rover, lander, you know these things. And now these two programs we are talking about lunar mission or moon mission.
ठीक है. The rover will, roll on the surface and get certain samples. This is the first robotic rover. Viper rover is the robotic rover. Robotic rover. So its main objective is to analyze the ice samples for water. And rover is basically similar to the size of a golf buggy. Golf buggy is there, golf cart. Areas where NASA believes water ice may be found. So हम वहाँ पर एनालाइज करने जा रहे हैं. मिनरल एनालिसिस नहीं है उसका ऑब्जेक्टिव, वाटर फॉर्मेशन देखने का ऑब्जेक्टिव है कि वेयर द वाटर पार्टिकल्स आर देयर. वाइपर रोवर टू सर्च फॉर आइस वाटर ऑन द मून. ओके, सो विच कुड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, एयर, रॉकेट फ्यूल नीडेड फॉर फ्यूचर मैन्ड मिशंस टू द मून. एक चीज हम यहां पे रोबोटिक के थ्रू सर्च कर रहे हैं, वेयर द वाटर इज, बिकॉज वी वांट टू सेट आवर नेक्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एट द मून. स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून. स्लिम टेक्नोलॉजी. स्लिम, it is by the Japan, and Japan recently became the 5th nation in the world to have a soft landing on the moon. 5th nation, Japan, to have soft landing on the moon. Previously, which countries have had the soft landing on the moon? US, Russia, China, India. Okay, and now Japan also. इसमें एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट इनटू दिस टेक्नोलॉजी विल फाइंड व्हाट इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड. जनरली आप देखते हो as soon as a lot of technologies are used. Slingshot technology is one such technology we have discussed in the previous science and tech current affairs lectures in the TFR only. तो क्या होता है कि ये जैसे लैंड कर रहा होता है, here you will find, है ना, बेसिकली यहाँ पे at some kilometers, before some kilometers itself हम सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जाते हैं. इसीलिए कई बार हार्ड लैंडिंग भी होती है सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय. इट इज कॉल्ड एज स्मार्ट लैंडर because what happens that as soon as it reaches, you can see in the picture also, this is the area from where the gases were fired. First site for landing is this point. Okay, main leg touchdown, one leg touchdown is there. After hovering here, one leg touchdown is there, so that it is very precise, it is very smart. And then front leg touchdown, then the front legs will touch down, these two legs will touch down. Okay, and then stabilization will happen. अगर हम इस टेक्नोलॉजी को आगे रेप्लिकेट कर पाएंगे, which can be given by the Japan here itself, तो फिर कभी भी क्रैश लैंडिंग नहीं होगी या हार्ड लैंडिंग नहीं होगी मून पे. It is a very precise technology for the soft landing, and it can be done up from the 100 meters itself, very close. जहाँ पे हम कई बार किलोमीटर्स 1 और 2 किलोमीटर्स पे होवरिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, नाउ 100 मीटर्स तक हम कंट्रोल कर पाएंगे. लूनर गेटवे स्टेशन, जस्ट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वी हैव, है ना, इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट. सिमिलरली लूनर गेटवे स्टेशन एक बनाना चाहते हैं, विच विल रिवॉल्व अराउंड द मून. 6 days टू ऑर्बिट द मून, एक मून के लिए बना रहे हैं. Lot of countries, 4 countries from the International Space Station who are the part of ISS, International Space Station, have joined the Lunar Gateway Station. ठीक है. उन 4 countries के अलावा यहाँ पर UAE has shown a lot of interest कि यार we also want to be the part of Lunar Gateway Station. Here अभी तक इंडिया नहीं आया है. India has yet not been there कि we want to be part of it, but soon India will also join the Lunar Gateway Station. We all know that. अब यहाँ पर क्या होगा? Okay, like manned missions to the moon, if you want to send, we will send it directly. That will dock into it, dock their satellites into it, and as soon as it reaches near to the moon, we can come directly to the moon and go back to the lunar gateway station and then come back to the earth. तो एक तरीके का international lunar space station है ये. Lunar Gateway Station, primary component of NASA's Artemis program. Okay, UAE, please students याद रखना, UAE has announced its participation alongside the NASA, Japan, Canada and the European Union. Because India has already signed the Artemis Accord right now, so we are expecting that sooner or later India will also be part of it. GSAT-20 renamed as GSAT N2. ये इसका weight बहुत ज़्यादा है. We know that, GSAT, GSLV vehicle we have. Okay, we have PSLV also.
बट GSLV की भी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वेट है इसका. इट्स अ डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, wholly and solely owned by न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL. देखो कई सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं, L बैंड, S बैंड, C बैंड, KU बैंड एंड KA बैंड. डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर देयर, यू कैन सी. So for communication we communicate into certain frequency and wavelength we talk about. Okay, so frequency is inversely proportional to wavelength. We all know that. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी, वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी. तो प्रीवियस टाइम्स में बहुत बड़े बड़े एंटीना होते थे क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता था. अगर हमें वेवलेंथ रिड्यूस करना है, अगर हमें एंटीना का साइज छोटा करना है तो हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी. सो वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम L बैंड टू द KU एंड KA बैंड. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमने जैसे इंक्रीज की, एंटीना का साइज छोटा हो गया, जिसकी वजह से अभी हम डायरेक्ट टू होम D2H फैसिलिटीज दे पा रहे हैं. सब लोग अपने घरों में एक छोटा सा एंटीना लगा रहे हैं जिसकी वजह से दे कैन वॉच टीवी एट देयर ओन होम, है ना. पहले हम केबल कनेक्शंस लेते थे. सो D2H फैसिलिटीज प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ KU एंड KA बैंड फ्रीक्वेंसीज. इन फ्रीक्वेंसी के जो ट्रांसपॉन्डर हैं, बेसिकली दे हैव ट्रांसपॉन्डर्स. तो इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ट्रांसपॉन्डर्स को स्पेस में ले जाने के लिए बहुत, बिकॉज दे आर हैवी वेट, फॉर दैट रीजन इसरो विल बी यूजिंग SpaceX Falcon 9 रॉकेट. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं एग्जाम में, दे विल थिंक दैट GSLV ही लेके जाएगा उसको. इट्स अ हाई थ्रोपुट KA बैंड सैटेलाइट, फुल्ली ओन्ड, ऑपरेटेड एंड फंडेड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, weighing 4,700 kg, meet the demanding service needs of remote and unconnected regions. It's a demand-driven satellite. Much heavier than the launch capacity of ISRO's most powerful rocket, LMV-3. Hence, India will use SpaceX Falcon 9 rocket to launch the communication satellite in 2024. It will be the second demand-driven satellite launched enabled by NSIL. ठीक है, NSIL is a commercial arm of ISRO. It is a central public sector enterprise, CPSE है, undertaking, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसने अब तक 11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑलरेडी मिशन एग्जीक्यूट किया हुआ है. प्रीवियसली जो था टाटा वी नो दैट टाटा प्ले परचेजिंग इट्स कैपेसिटी फॉर डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग. फर्स्ट डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट जो है GSAT-24 लॉन्च किया था NSIL ने. दिस इज द सेकेंड GSAT-20. फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स. पहले जो हम एलिमेंटल एनालिसिस करते थे, वेदर इट बी रॉक्स, वेदर इट बी डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, तो वो सॉफ्टवेयर जो था, हम वी वर डिपेंडेंट ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और डिफरेंट कंट्रीज. अब इंडिया ने खुद बना लिया है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो डेवलप्ड फीस्ट, अ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर. फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर डिफरेंट एलिमेंट्स की एनालिसिस कर सकते हैं. इज अ कंप्यूटराइज्ड मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग हाउ अ प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू रियल वर्ल्ड फोर्सेस. दिस विल बी हेल्पफुल इनटू स्पेस टेक्नोलॉजीज. अगर हम मून के सरफेस पे हम बहुत सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं तो अभी हमें फॉरेन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. इट विल बी यूज्ड टू परफॉर्म finite element analysis of various types of structures including rockets, aircraft, satellites, buildings, etc. So far, users have mostly dependent on the expensive software versions from foreign firms for this function. Now we have our own INSAT 3DS. ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. बेसिकली हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखेंगे. ओके, अर्थ के सरफेस पे चेंजेस देखेंगे. जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 is launching, is a joint collaboration of ISRO and the Indian Meteorological Organization IMD. Multispectral imager, 19 channel sounder, data relay, transponder, search and rescue transponder for the earth observation. ठीक है, simple satellite it is. INSAT 3DS, ISRO and Indian Meteorological Organization. Proba 3S mission. ये मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. इट इज अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी बट लॉन्च्ड बाय इंडिया. इट इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम द टेक्नोलॉजी. लाइक एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा, लाइक एट द 26 जनवरी परेड यू वुड बी फाइंडिंग दैट फॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स आर देयर, है ना. वैसे ही क्या हम स्पेस में डिफरेंट सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन बना सकते हैं.
for better probing opportunities into the coming future. So it is the world's first precision formation flying mission. Just like aeroplanes की तरह हम satellites की भी को क्या हम formation में launch कर सकते हैं. So it's a first precision formation flying mission. India's ISRO and European space agencies will be launching it in 2024 September. India's polar satellite launch vehicle PSLV XL will be used for it. So this is also a very good example of joint collaboration of international partners, and this is showing the India's soft power diplomacy, space diplomacy at the international stage over here. 30-meter telescope mount kiya in Hawaii. Basically it is proposed right now. Location will be Mount Kia, US, Japan, China, Canada and India. यहाँ पे important है, India is also a part of it. Indian Institute of Astrophysics is leading the consortium Indian institutions that are involved with the 30-meter telescope project. बहुत बड़ा telescope होने वाला, 30 meter in diameter. The size of this will be 30 meters in diameter, 655 square meters. Total collecting area will be this much. It will be jointly funded by the Department of Science and Technology and the Atomic Energy, Department of Atomic Energy as well as. So 12 times sharper than that of Hubble Space Telescope. ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि कितना ज़्यादा इसमें मिरर यूज़ हो पा रहा है. 30 मीटर टेलीस्कोप माउंट किया में लगा करके हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बेटर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट. दिस इज पेम्बा इफेक्ट. Memba effect is what, you know, ये बहुत पहले से हमको पता है, but recently it is getting the, you know, news. If I ask you, गर्म पानी आइस बन सकता है या ठंडा पानी आइस बन सकता है? Hot water can get converted into ice faster or cold water will get converted to the ice faster. Common sense will definitely say first hot water will take certain energy. Hot water will take, we need to take out certain energy, okay, so to make it cool, है ना, to make it cold water. So this delta E or delta H that we need to take out of the hot water to make it cold water, and after that we need to take certain more heat out of it to make it ice. Okay, latent heat of vaporization, lot of factors are there. I am not going there because some students will get confused. कुछ heat निकालनी पड़ेगी और कुछ ठंडा करना पड़ेगा so that it gets converted to the ice. But to that contrary, you will find that hot water can freeze faster than the cold water in similar conditions. Hot water can freeze faster. Freezing, we are talking about getting converted to the ice. Freezing. Hot water gets converted to the ice faster than the cold water. ये है Memba effect. Have we observed that the Memba effect, hot water freezing faster than the cold water? This is the point of it. इसके applications बहुत जगह पे हो सकते हैं because right now the climate change is rampant. तो हमारे जो hot water areas हैं, बहुत सारे इसमें भी debates चल रहे हैं कि वहाँ पर के क्या हम कुछ water को freeze कर सकते हैं, and its impact on the lakes, glaciers. Getting the point? Okay guys, so thank you. Let's meet in another lecture. Keep revising, keep working hard, and do join the current affairs crash course.